अश्विनी, वैष्णव और टेलिट सीईओ ने कनेक्टिविटी मॉड्यूल के निर्माण के लिए VVDN की नई SMT लाइन का उद्घाटन VVDN के कार्यालय IM मानेसर हरियाणा में 10 अक्टूबर 2023 को किया। VVDN ने टेलिट सिनेटेरियन के लिए 4G 5G कनेक्टिविटी मॉड्यूल और डेटा कार्ड बनाने के लिए नई SMT लाइन स्थापित की। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल Z न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गुरुग्राम 10 अक्टूबर 2023। भारत सरकार के केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी, वैष्णव और टेलिट सिनेटेरियन के सीईओ पाओलो डेल पिनो ने आज VVDN टेक्नोलॉजी में एक नई SMT लाइन का उद्घाटन किया। इंजीनियरिंग, विनिर्माण, डिजिटल सेवाओं और समाधान के वैश्विक प्रदाता VVDN टेक्नोलॉजी ने 4G और 5G कनेक्टिविटी मॉड्यूल के साथ टेलिट सिनेटेरियन के लिए डेटा कार्ड बनाने के लिए एक नई और समर्पित SMT लाइन स्थापित की, जो इंटेलिजेंट एज समाधानों का एक वैश्विक प्रवर्तक है। टेलिट सिनेटेरियन के भारत में निर्माण करने के निर्णय से भारत में व्यापार, पहुंच और मॉडलों का विस्तार होगा और जैसे जैसे देश का प्रौद्योगिकी उद्योग बढ़ेगा, टेलिट सिनेटेरियन डिजाइन और मेक इन इंडिया समाधान का उपयोग करके इसे संबंधित करने में सक्षम होगा। हाईटेक उत्पादों के लिए एकीकृत डिजाइन और विनिर्माण की VVDN के अनूठी ताकत ने बड़े वैश्विक ग्राहकों को अपने उत्पाद डिजाइन और विनिर्माण के लिए VVDN के साथ काम करने में सक्षम बनाया है। कंपनी ने कहा कि उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन की रणनीति ने उसे एक अद्वितीय प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान की। PCB असेंबली, मैकेनिक, टूलिंग और मोल्डिंग, डाई कटिंग, डाई कास्टिंग, पूर्ण PTS, पूर्व अनुपालन, प्रमाणीकरण करने की अपनी क्षमता के साथ VVDN नवीनतम और विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्माण करने में सक्षम है। पुनीत अग्रवाल, CEO VVDN टेक्नोलॉजीज। हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी, वैष्णव और टेलिट के CEO श्री पाओलो डेल पिनो ने मिलकर हमारी नई SMT लाइन का उद्घाटन किया है। ये नई समर्पित SMT लाइन उनके मॉड्यूल, डेटा कार्ड और कस्टम उत्पादों का निर्माण करेगी। ये नियोजित विस्तार भारतीय विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र और अधिक व्यापक और गहरा करने के VVDN के प्रयासों के अनुरूप है, जहां अंतिम उत्पादों के साथ VVDN बड़े पैमाने पर विनिर्माण मॉड्यूल और डेटा कार्ड होगा, जो स्मार्ट एनर्जी जैसे बहुउद्देशीय उद्योगों में जाने वाले उत्पादों में अपना आवेदन पाता है। EV चार्जिंग, स्मार्ट बिल्डिंग, टेलीमेटिक्स, रिटेल आदि। पाओलो डेल पिनो, CEO टेलिट सिंटेरियन। टेलिट सिंटेरियन भारत को उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में एक उभरते वैश्विक नेता के रूप में पहचानता है, जो पर्यावरण संबंधित चिंताओं के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाता है। VVDN के साथ यह समझौता एक गेम चेंजर है, क्योंकि यह न केवल ये सुनिश्चित करता है कि हम अपना विकास करें समय से ग्राहक, लेकिन हमें भारत में डिजिटल परिवर्तन क्षमता का नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है। लेकिन ग्राहक भी समय से पहले हमें भारत में डिजिटल परिवर्तन क्षमता का नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है। श्री अश्विनी, वैष्णव का उदाहरण। मैं इस महान अवसर के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और VVDN को बधाई देता हूं। प्रौद्योगिकी ये जानकर बहुत खुश हुई कि VVDN में पहले से ही 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं और इससे भी अधिक खुशी है जान लें कि 70% से ज्यादा हमारी बहनें हैं। जिस तरह से भारत में 5G को लॉन्च किया गया है, ये बहुत गर्व की बात है। हम सब, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी इंजीनियरिंग प्रतिभा और निर्माण करने की हमारी क्षमता कैसी है। दूरसंचार उपकरण अमेरिका, यूरोप, जापान को निर्यात किए जाते हैं और हमारे उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले माने जाते हैं। ये आज उद्घाटन की कई लाइन 6 सिग्मा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखेगी और कक्षा 8 के स्वच्छ कमरे वाली होगी। और यही चीजें हैं कि जो हमें अलग करती हैं और हमें बिल्कुल अलग स्तर पर रखती हैं। हम सभी को ये सुनिश्चित करना होगा, हितधारकों, सरकार, कर्मचारियों की, हमें उत्पादनों की गुणवत्ता और उसमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। हमारी उत्पादन प्रणाली, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत एक प्रमुख दूरसंचार, डिजाइन, नवाचार और विनिर्माण आधार के रूप में विलीन हो जाए।
different production sites, and the Indian sites will become central in our strategy. We are investing in technology since more than 20 years, and we are sure that there is an opportunity of digital transformation in this country like probably nowhere else. And we want to transform the made in India design, made in India manufacturing into something that will be very successful in the coming decades. So we want to be part of this game. We already have a center in Bangalore with many engineers working for our team, and this partnership with VVDN is for us a starting point for becoming Indian. And my team of management is almost always Indian at diverse levels, so we are really proud of this opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Paolo. Sir, now I will take you to the real production floor. The SMT line and the production line which we have set up, where work was happening from last 6 months, and a lot of hard work has gone because this was a very complex production line. But finally, we were able to successfully set it up, and we did a test run also last week. But our production will start from today, and this is a great day for VVDN and I'm hopeful for India as well. So Murli, who heads your production, is here on the production line. Murli, over to you. Okay, sir. It's an honor to have you here today. So this is a line that we have set up for Telit, this module production. This SMT line comprises mostly 3 stages. One, kind of paste printing stage where the CD gets pasted, and the second one we do have a component placement stage, and then machine that we have which can place close to 1 lakh components per hour. So that places even the fine pitch component of O2 oven, that's the sub millimeter components also gets placed in these devices, which are complex, a very high dense component placement here. Once that gets placed, it goes to the reflow oven. That's where the component gets solidified, the solder, and then the component gets firmly placed onto the PCB. Then we place heatsink RF shield on top of it. So that's where the final module gets produced. Then this module then gets depaneled, verified, tested as the individual modules. This is a LTE and LTE cum GPS module. So, and then this modules gets finally packed and tape reel for shipment. So this is the final module that gets packed into the reel, thousands of modules, and that gets shipped all over the world. So these modules goes to each and every board. So even VVDN, when we produce the board, the same kind of module. This is Telit module that gets. This is now the final product where the module also becomes a part of the product, gets shipped all over the India and the world. So this module not only we are producing, we are also shipping across the globe, and the millions of products gets connected to LTE due to this module. That's one thing. So one, based on all the government initiatives with whatever revolution going on in the electronic industry, I think VVDN is gone to the next step from whatever products that we are building to next level. This is a component module manufacturing is the complex one. So we are stepping ahead to next stage of electronic manufacturing. I think from a small module to complex servers that VVDN is capable of manufacturing and then shipping the units around the globe. So, okay, thank you, Murli. Thank you, Murli. Ashwini sir, Murli, go ahead. Complete. Yeah. Sir, I request Honorable Minister and Telit CEO, Mr. Paolo, to inaugurate the SMT line for Telit mass production. Thank you, Ashwini sir. Thank you, Mr. Paolo, for inauguration. Ashwini sir, some word from you. Always the whole India wants to listen to you. I think same here. Please, sir, give your perspective on this partnership, sir. Thank you very much. This is really a
matter of pride for all of us that such an advanced manufacturing process is now starting in our country. And this all goes back to about 9 years back when the leadership in the country changed and we got a leader who could think ahead, who could clearly lay out a vision, who could put enough energy and focus so that the vision gets implemented, and this is the result today. So I congratulate the VVDN team, I congratulate the Telit team, I congratulate all the employees present here, and especially the sisters who are present here. All of you are so talented that you will all make our country proud. मैं साथियों आपके सामने 3-4 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। आप देखो, एक लंबे टाइम तक देश में टेलीकॉम इक्विपमेंट केवल और केवल इंपोर्ट होता था। देश में मैन्युफैक्चर होगा और एक्सपोर्ट होगा टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्लैरिटी के साथ, एक विजन के साथ, एक फोकस के साथ काम किया, उससे आज अपने सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल से हम देश में गर्व कर सकते हैं अपनी ताकत पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर। 5G का लॉन्च हुआ लास्ट October 1st October 2022. Within one short year, our country, Bharat, has become among the top 3 ecosystems for 5G. It's a matter of great pride. The way 5G was rolled out, the speed at which things were done, it's really a matter of great pride. In parallel, so many things were done to make sure that telecom manufacturing comes to India. I'm very happy to share with you that today close to 2,419 crore investment has actually happened in telecom manufacturing in India. The sales from these units has already topped 34,000 crore. Exports are 7,600 crore. And the most important thing is that by now employment in these units, supported by government's policy, supported by Prime Minister Modi ji's policy of PLI, the employment in these units is today 17,753. And this employment number is increasing day by day. Within the next few years, in telecom manufacturing alone, we will see close to 4,000 crore total investment, which is double of what has already happened, 44,000 employment, and 2,37,000 total sales revenue. This is a matter of great pride for all of us, because this shows how our talent, how our engineering talent, our ability to manufacture precision equipment is today recognized by the entire world. Today, telecom equipment manufactured in India is exported to many countries, including US, European countries, Japan. These are highly developed countries, and we feel proud that our products are today accepted as high quality. Many of the times, many of the lines, for example, this line today inaugurated, will be maintaining 6 Sigma quality standards. It will be having a class 8 clean room. So these are the things which distinguish us, which will place us in a very totally different level, and we should all strive, the partners, the ecosystem, and the government officers, we should all try and make sure that we maintain these quality standards, and we continuously strive to maintain the quality of the products and the consistency in our production systems. I thank you all for this great opportunity.
We have reached many milestones, and we will be making sure that India emerges as a major telecom design, innovation, and manufacturing base. You would also be very happy that ITU has accepted our inputs in the standardization of 6G equipment, 6G standards. It's a great thing, and this process will be further strengthened in the coming years, and we hope and we are working towards positioning India as a leading standards and IT contributor to the 6G journey. So this is the journey, and this all was possible only because our Prime Minister had a very clear vision of making India as a leader in telecom technology, leader in telecom manufacturing, and there are many critics. I would also like to reply to them, those who say that value addition is not there in India, should come and see this plant and see how much depth we are now acquiring in the telecom and electronics manufacturing. Very happy to know that VVDN already has 10,000 plus employees, and very happy to know even further that 70% of them are our sisters who are working on this. I would like to hear from the sisters, what do you think about this entire thing? मैंने आप क्या सोचते हो और आपकी क्या सजेशन है, आपसे सुनना चाहूँगा। सबसे बात करो आपके। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम आकांक्षा द्विवेदी है। मैं यहाँ इस कंपनी में SMT में पिक एंड प्लेस ऑपरेट करती हूँ। मैं इस कंपनी में पहली बार जब आए थे तब हमने पहली बार ये देखा कि जिन बाकी कंपनियों में लड़कियों को मशीन चलाने की कोई परमिशन नहीं थी, उस कंपनी ने हमें मशीन चलाने की परमिशन दी, और आज हम इतने कैपेबल हैं 3 साल में कि हम इस मशीन को अकेले ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम उस आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान समर्पित कर रहे हैं, और हमारे VVDN की तरफ से भी बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है। हम इस कंपनी में काम कर आज उस रास्ते पर या उस हद तक हम सक्षम हुए हैं कि हम अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम VVDN के साथ काम कर रहे हैं, और हमें आज इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है कि मैं VVDN के शब्द में कुछ कह सकूं। आपके परिवार में, आपके घर में जब आप एक्सपीरियंस बताते हो, किस तरह से आप इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को हैंडल करते हो, कैसा लोगों का रिएक्शन रहता है? जब मैं पहली बार कंपनी में आई थी तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि इस मशीन को कैसे संभालना है, मशीन हमें संभालनी है, ये बहुत काफी महंगी मशीनें हैं, कहीं इसमें कुछ हानिकारक चीजें ना कर दें, हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो। पर धीरे धीरे हमें हमारे सीनियर्स ने सिखाया, हमें एक्सपीरियंस दिया, और आज मैं इतनी कैपेबल हूँ कि इस पूरी लाइन को अकेले हैंडल कर सकती हूँ, और पूरे अपनी टीम के साथ, सपोर्ट के साथ इस लाइन को हैंडल करती थी। लेकिन ये मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत ही प्यारा अनुभव है। मैं किसी को बताती हूँ कि मैं इतनी महंगी और इतनी अच्छी मशीनों को हैंडल कर रही हूँ, तो वो मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। हमें भी आप पर गर्व है, और आपने जो सीखा है जितना हो सके दूसरी बहनों को भी सिखाना है। जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छे। और कौन? गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा नाम अंकिता यादव है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मुझे यहाँ काम करके 3 साल हो गए। मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा और गर्व महसूस होता है, और हर दिन हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हमारे कलीग्स, हमारे सर हमें सपोर्ट करते हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसे हम साकार होते हुए देख रहे हैं। हम इस मशीन को अकेले हैंडल करते हैं सर। पहले जब हम आए थे तो इसे बिल्कुल हैंडल करना कैसे करना है, तो हमारे सर, हमारी सीनियर्स हमारी हेल्प करते हैं, उसे सिखाया, हमें बताया कि कैसे ऑपरेट करना है। आज हम इस पूरी लाइन को अकेले लीड कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनें आपने सीखी, सीखने में कितना समय लगा? सर, हमें हमारे सीनियर्स ने सपोर्ट किया, ज्यादा समय नहीं लगा, बट लगा सर। आपको जब ये गर्व के साथ अपने कानपुर शहर में कहाँ रहते हैं आप? आपका परिवार कहाँ रहता है?
पनकी सर। पनकी में IIT के पास। जी सर। मेरा सौभाग्य था, मैं IIT गया था, IIT कानपुर। ठग्गू के लड्डू खाए आपने? यस सर, ठग्गू के लड्डू खाए। बहुत अच्छे। तो पनकी में जब अपने परिवार के दूसरे लोगों को और साथियों को बताते हो आप कि ऐसी बड़ी मशीन हैंडल करते हो, तो कैसे बोलते हैं, क्या रिएक्शन रहता है? सर वो विश्वास नहीं करते कि मैं इतनी बड़ी मशीन हैंडल करती हूँ, लेकिन मैं जब उन्हें बताती हूँ, दिखाती हूँ कई चीजों को, तो वो गर्व महसूस करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे माँ बाप सब मुझे बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ। बहुत अच्छा। आपने देखा किस तरह से मोदी जी ने स्पोर्ट्स हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर फील्ड में बेटियों को, बहनों को एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। यस सर। अच्छा लगता है इससे? बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। हमें बहुत जगह ऐसा है कि सर लड़कियों को दबा कर रखा जाता है, बट हमें ऐसा नहीं, हम आगे बढ़े हैं, काम करें, मशीनों पे वर्क किया है। कई जगह सर मशीनों पे वर्क करने लड़कियों को नहीं देते, बट VVDN ऐसी कंपनी है, हमें गर्व महसूस कराती है, हमें सीखने का मौका दिया है उसे। गुड, Yeah. वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम पूजा उमरे, मैं बांदा जिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल से डेस्क शोल्डर बेस्ड प्रिंटर ऑपरेट करती हूँ और मुझे यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा फील होता है, बहुत गर्व महसूस करती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत गर्व महसूस करती हूँ। मैं सभी बहनों से एक क्विज पूछना चाहता हूँ। देश में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन कौन से प्रदेश में बनते हैं? यस करो। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देश के 60% से करीब करीब मोबाइल फोन बनते हैं। अच्छा लगता है सुन के? यस सर। अच्छा, अब एक और सेकंड में आपसे पूछता हूँ प्रश्न। आज से 10 साल पहले भारत में जितने मोबाइल फोन यूज होते थे, उसमें से कितने भारत में बनते थे? मान लो 100 मोबाइल फोन यूज होते थे, तो 100 में से कितने प्रतिशत भारत में बनते थे? बिल्कुल मिनिस्ट्रल 1%, 2%, राइट? आज कितने बनते हैं? 98%। आज भारत में जितने मोबाइल फोन यूज होते हैं, उसका 98% भारत में बनते हैं। अच्छा लगता है किस तरह से मोदी जी ने जिंदगी अपने पूरे की पूरी जिंदगी बदल दी, एक तरीके से सोचने का तरीका बदल दिया। ये इस प्रोग्राम का आपको नाम पता है? मेक इन इंडिया इस प्रोग्राम का नाम। यस सर। तो आप सब मेक इन इंडिया के महारथी हो। यस सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, Shri sir. So much of motivation. इतने हम इतने उत्साहित हो गए कि मतलब अगले एक महीने तक खाने की भी जरूरत नहीं है। We are so excited to hear all these things, right? I think Vaishnav would like to also to say his perspective. Vivek. Shri sir, thank you for making time for this event. I know you're very busy right now, but आपका encouragement, आपका support हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ा फ्यूल, एक एनर्जी का काम करता है। एंड we are 100%, 200% कमिटेड कि हम आज जैसे टैलेंट हमारे पास आए हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, we are committed to bring more and more तो ग्लोबल टॉप OEMs हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, हम उनको इंडिया में लेकर आएंगे, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, IP क्रिएट करेंगे, इनोवेट करेंगे और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। We are very much committed and thank you for your time, sir, for joining us and for encouraging us. I also want to thank Paolo and the entire management team. A lot of Indians in the management team. So Paolo is very supportive of India, first of all. And Paolo, thank you. You have traveled from US. He was very busy, but because this event, he also flew into the country last night, and he's very excited and he's committed to do more in the country, sir. So thank you both for all the support and sir, VVDN is committed, sir. जो आपने numbers दिए, वो numbers को exceed कर रहे हैं, sir.
in terms of employment, in terms of export, and in terms of revenue. We will exceed all your numbers. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Today, a major success story. Already, the investment has crossed 2,000 crore. It is today 2,419 crore under the PLI scheme for telecom equipment. Sales in the PLI schemes for telecom equipment manufacturing PLI is 34,516 5G ecosystems in the world. All this was possible because of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's clear vision of making India a telecom leader in terms of design, in terms of manufacturing, in terms of service. Complete focus on deepening the ecosystem, complete focus on making sure that we get the best of the technologies developed in the country and become exported. I'd like to take questions. Hello, sir. Hi. Sir, one question is, which are the countries or geographical locations where the manufactured products of VVDN will be exported? I'll tell about the entire industry. The telecom manufacturing industry in India is quite mature now. And within a very short time frame, we have started exporting to US, to UK, to Netherlands, to France, to Spain, Austria, UAE, Japan, and many more countries. And sir, one more question, sir. Sir, can we see more such foreign companies like Telit to partner with Indian players in anytime soon, in coming months or something like that, in the telecom sector specifically? Yes, there will be many more companies who want to manufacture in India, and we are very happy with the design capabilities of our companies and very happy with the government policy that clearly placing India as a trusted value chain partner. Please mark my words, I am not saying supply chain partner. I am saying value chain partner. So by value chain partner, we mean that many of these countries want to get the design also done in India. So design, manufacturing, combined makes us a very, very important trusted value chain partner. Thank you, sir. My question is, I'm Ajit from Radiance Media. My question is, how far involving women and the way girls were talking and taking care of the production line, complex production line. So how far do you see that more women will come to these complex technologies in the telecom sector, and how is the Atmanirbhar Bharat program going to spread apart from this? Are there any other production lines also in the process or in plans in the near future? In a very major way, under the Atmanirbhar Bharat program, our Prime Minister's focus has been on empowering and training and skilling some of our very young and energetic friends, and you are seeing the confidence of those people who are working, those girls who are working on those complex machines. They are handling those machines with precision, they are handling those machines with a lot of confidence, and this is a trend that we will see continuously in the coming days. We will go to other places also soon, and we will see that this is a very, very good success for the country. And this clearly shows how much our girls, how much our daughters and sisters they can achieve. Which on करो? Off कर दिया. थोड़ा आगे आ जाएंगे. So the biggest challenge with new technologies like 5G and now 6G is the affordability. So how does the government plan to make it more affordable for general public? Excellent question, and I would like to address this in two ways. First is the cost of data.
cost of data and cost of 5G services is today equal to the cost of 4G services. And India's telecom sector has been rated by International Telecommunication Union, ITU, as the most affordable market in the entire world. So that's a matter of great happiness for us, matter of great satisfaction for us, because telecom sector feeds into the digital India, and all these services which ride on digital India, they are today accessible to the poorest of the poor, to the farthest locations at a very, very affordable cost. And the second point I would like to make is, because of the good success of our mobile phone manufacturing industry, today we have entry-level mobile phones which are 5G capable, 5G enabled. They are coming at 10,000 rupees, 11,000 rupees. So that's a great success because this has helped us very rapidly achieve a penetration of about 10 crore 5G subscribers in the country in a very short time frame, just 1 year. So this is possible because the mobile phones are affordable and entry-level phones are available at 10,000, 11,000. So another question. India is currently one of the leading nations in 5G, but many other nations are still very much behind. So will India be aiding other nations as well? Yes, we are manufacturing telecom equipment for 5G and we will be exporting, and our companies are supporting the entire telecom operations of many countries in the world. So we have today emerged as a leader, and this is very clearly thanks to our Prime Minister's vision. If you recall, last year IMC, 2022 IMC, and I invite all of you to join the IMC in the coming few days. In last year IMC, Prime Minister gave us the target that we should emerge as a leader in 5G and 6G. The days of 2G and 3G, which were what they were, very full of corruption, full of taking the country back, those days are over. And today the country is looking forward under Prime Minister's leadership and looking at not only designing the equipment but also manufacturing them and also helping the world in developing their ecosystems. So good afternoon. So this is Sanjay Agarwal. So I wanted to ask you, talking about the Indian Mobile Congress, and the Indian Mobile Congress is just next week. So when we're talking about 5G and we're talking about artificial intelligence and IoT, so what are the challenges we are looking forward in that meets the Indian Mobile Congress? So AI, IoT and telecom, all of them are basically converging towards one common theme. As you are aware, there is a lot of convergence in the digital world, and we can see that this is opening up new opportunities in industrial efficiency, in manufacturing efficiency, in transportation, in healthcare, in education. Multiple sectors, new opportunities are coming up. We are also aware of the risks of AI, and that's why we are going in a very measured way where we can use the benefits of AI, IoT, ML, and also simultaneously guard and keep our society safe. So you were in the G20 presidency, you were there at Gurugram, and you talked about the cyber security, the threats. So what are looming now? So how do we Indian government take care of that? We have taken many steps on this, and I'm also very happy to share with you that India's ranking in the global cybersecurity has significantly improved from about 40 something to among the top 10 in the world today. And many more steps are being taken by which we will be among the top 5 countries in cybersecurity preparedness also. सर myself Ansari from Delhi. मैं जानना चाहता हूँ सर, आत्मनिर्भर भारत के तहत जैसा भी हमने देखा ही लड़कियां यहाँ पे लगी है, तो सरकार क्या काम कर रही है कि हर कंपनी में छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करके इन कंपनी में लगाया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे नौजवानों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग आज मिल रही है कि उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है,
और ये अपॉर्चुनिटीज इस तरह की अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपने देखा बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन्स पे नौजवान काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ सीख रहे हैं और अपने साथ ही साथ दूसरे और नौजवानों को भी वो लोग जोड़ रहे हैं और ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे आने वाले समय में एक एक फैक्ट्री में 20-20 हजार नौजवान एक साथ काम कर रहे हैं। इस तरह की फैक्ट्रियां देश में डेवलप हो रही हैं। Sir, what is the turnover of the company and how many employees you have and how many students you are training? Is it a 24/7 company or it's have a shifts? मैं किसी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में यहाँ पे नहीं पता जानकारी नहीं दे सकता। मैं पूरे सेक्टर के बारे में बोलूंगा, टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। टेलीकॉम सेक्टर में आज एक बहुत ही ताकत है, बहुत ही ज्यादा एक जोश है और जैसा मैंने कहा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला के टेलीकॉम सेक्टर डेवलप हो रहा है। यानी टेलीकॉम सेक्टर में भारत एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर की तरह होता है। ट्रस्टेड वैल्यू चेन, सप्लाई चेन नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यू चेन पार्टनर, जिसमें डिजाइन भी भारत में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हो रही है और इन इक्विपमेंट की दुनिया भर में सर्विस कैपेबिलिटीज, लाइफ साइकिल मेंटेनेंस, वो सब भी भारत से। मोबाइल कांग्रेस में भी आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा जो अभी शुरू होने वाली है नेक्स्ट वीक। IMC की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। IMC हम ही कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है। चलिए नेक्स्ट। नमस्कार, मैं मोहम्मद जोशी शाहवानी समाचार से। मैं पूछा कम्युनिकेशन सेक्टर में अभी तक कितने स्टूडेंट के रूप में रोजगार पाने के लिए काम कर रहे हैं? मैंने आपको बताया PLI सपोर्टेड जो प्रोग्राम्स हैं उसमें 17,753 नौजवान ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनको रोजगार मिल चुकी है या ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट की जो है वो पॉसिबिलिटी है? हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग के साथ ही प्लेसमेंट। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। So some syllabus contents and some parameters for the scholars, those who want to participate in innovations related to artificial intelligence and machine learning and other things which could be translated into the fields like agriculture. हाँ बिल्कुल, स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया के तहत जो कार्यक्रम है सारे, इसमें कई सारे स्टार्टअप जुड़ सकते हैं। आपने देखा स्टार्टअप में भारत किस तरह से एक बड़ा हब बन गई है, तो जरूर आप उससे जुड़े और इसमें नई अपॉर्चुनिटीज का इसके एफिलिएशंस के पैरामीटर्स है, कोई काउंसिल ऐसी है अलग से? VVDN unveiled its plan in experiment in Europe under its new initiative. What is that? ओके हो गया अब। period of time हमने अपने R&D centers खोले across India and then we started off with the manufacturing as well. कितने R&D centers हो? Total we have 11, 10 इंडिया में, एक वियतनाम में। वियतनाम। और इंडिया में स्प्रेड क्या है, कुछ स्टेट्स में या? नहीं, across covering the entire north, west, down south to east. हमारा ईस्ट में भी, भुवनेश्वर में भी एक R&D सेंटर है। So तो बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पे we work from 5G to data center, networking, Wi-Fi, surveillance cameras, automotive, IoT, EV charger, you name it, new technology, and we are focusing on 6G also you are starting on 5G के साथ natural progression है 6G में. So ये this is how we are located globally. So ये पूरा इंडिया का सेटअप है हमारा. वियतनाम में we have R&D and then we have offices, global presence across the globe. Why? Because majority of our customers are from overseas. हमारा US का headquarter is in Fremont. And then we do serve Canadian customers, European customers, Korea में, Japan में. That's how we are spread across. And this is our global innovation park where we are sitting today. So ये वाला building we inaugurated in 2020, right? During COVID time frame. So that is also another very good case study. I must say that. ना नितिन गडकरी जी did the remote inauguration. वो हमारा in-person interaction because of COVID नहीं हो पाया था तब. So it was like a remote inauguration.
So one thing that I would like to highlight here is that this is like a true design and make in India company. So whatever products that we do today for our customers across the globe, we start from just the idea. For example, hypothetically speaking, एज अ ब्रांड मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे XYZ कैमरा बनाना है, उसमें ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, Wi-Fi 6 होना चाहिए, उस पर LTE या 5G कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें ब्लूटूथ फीचर होना चाहिए. सो वी जस्ट गेट एन आइडिया एंड वी आर टुडे 10,000 प्लस पीपल टीम, आउट ऑफ विच रफली 5,000 आर इंजीनियर्स. तो वो इंजीनियरिंग टीम देन कम टुगेदर इन द ड्राइंग बोर्ड. वो उसका पहले आर्किटेक्चर डिफाइन करता है, वो कस्टमर के साथ हम वेट आउट करते हैं. वंस कस्टमर गिव्स अ गो हेड, उसका प्रॉपर इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम दी हार्डवेयर डिजाइन टू सॉफ्टवेयर. एक पीसीबी के अलावा हम उस केसिंग भी करते हैं, मैकेनिकल भी करते हैं. सो इट्स लाइक अ कंप्लीट एंड टू एंड. तो कस्टमर हमारे पास आइडिया लेकर आता है एंड वी कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट विच इज लाइक वी से वी टेक द आइडिया एंड वी मेक इट हैपन, वी मेक इट अ रियलिटी. तो उसकी हार्डवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं. एक होता है सिस्टम का सॉफ्टवेयर एंड दूसरा बिकॉज वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड विच इज वेर इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द क्लाउड एंड मोबाइल एप्लीकेशन, राइट. आप सब कुछ फोन से कंट्रोल कर लेते हो आजकल. तो डिमांड बेस्ड है क्या, जैसे कि कस्टमर से जब आता है आइडिया? हाँ, सो कस्टमर्स बिकॉज बहुत सारे कंपनीज को अपने न्यू प्रोडक्ट्स के लिए दे नीड दिस काइंड ऑफ एन इनोवेशन. तो वो अपना जो R&D होता है वो आउटसोर्स करता है. सो वी हेल्प दोज कंपनीज. And software के अलावा testing goes without saying. We have spent a lot of amount of money in setting up the testing infrastructure. हमारे पास best in class 5G lab है, audio lab है, video lab है, Wi-Fi lab है, RF lab है, which is located all across the R&D centers that you just saw in the previous slide. Then comes the mechanical design. बहुत सारी design company will only end up doing the hardware, software and leave it there. बट हमने पूरा एंड टू एंड वी हैव ब्रॉट इट अंडर VVDN's umbrella. तो हम इसकी केसिंग भी करते हैं डिजाइन. देन ऑफ कोर्स एनी R&D प्रोजेक्ट स्टार्ट्स विद लाइक रिलीजिंग द प्रोटोज. वंस कस्टमर डज द फाइनल टेस्टिंग, वो प्रोटोज आर टेकन टू द मास मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रॉम द मास मैन्युफैक्चरिंग इट स्टार्ट्स ऑफ विद SMT जो अभी आपने देखा है. वहां पर आपका जो डिजाइन है वो SMT में एक बेयर PCB हम ले आते हैं, उसके ऊपर कंपोनेंट्स भी हम प्रोक्योर कर लेते हैं और एज पर अवर डिजाइन दोज कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन टू दी PCB. PCB के बाद वो एक प्रोडक्शन लाइन पे जाते हैं जहां पे बहुत सारी टेस्टिंग होती है. वो टेस्टिंग करने के लिए जो जिग्स एंड फिक्सचर्स यूज होते हैं, वी कॉल इट एज फंक्शनल टेस्टिंग और प्रोडक्शन टेस्ट स्वीट्स और सिस्टम्स. बहुत ऑटोमेशन होता है, वो भी हमारी इंजीनियरिंग टीम करती है. So it's fully automated production lines with all the equipments done in-house. And उसके बाद मैकेनिकल. सो अभी हम आपको एक टूर देंगे. वी हैव लाइक 6 more factories in Manesar itself, मैकेनिकल फैक्ट्रीज जहाँ पे मैकेनिकल की टूलिंग होती है, उसकी इंजेक्शन मोल्डिंग होती है, डाई कास्टिंग होती है. वो सब हम इंटरनली केसिंग निकाल के वी ब्रिंग दैट टू प्रोडक्शन फ्लोर और PCB को हम केसिंग के अंदर फिट करके उसका प्रोडक्ट का फाइनल टेस्टिंग करते हैं. एंड गुड थिंग इज कि जब ये प्रोडक्शन हो जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है. सो वी डू दैट प्री कंप्लायंस इन हाउस. वी हैव अवर ओन रिलायबिलिटी लैब, बेस्ट इन क्लास, जिसमें आपके एनवायरमेंटल चैम्बर्स हैं, वाइब्रेशन चैम्बर्स हैं, बेस्ट इन क्लास मशीनरी. आउटसाइड एनवायरमेंट के लिए यूज होना था, हार्श एनवायरमेंट्स के लिए, वो सारा हम अपनी लैब में प्री कंप्लायंस उसकी टेस्टिंग करते हैं एंड देन वी सेंड इट टू द लैब्स फॉर द फाइनल सर्टिफिकेशन. सर्टिफाई होता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग और अपने कस्टमर को हम फुल्ली पैकेज प्रोडक्ट देते हैं एंड दैट इज आवर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन. सॉरी मैम, इंटरप्ट कर रहा हूँ. ये बताइए कि जैसे हम लोग सारे मीडिया हमें इसे आजकल हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इज वेरी यंग पॉपुलेशन. वो सारे गैजेट्स ये सब यूज करते हैं. तो कैमराज ले लो आप, नेक बैंड हो गए, ऑडियो, TWS आपके जो डिवाइसेस होते हैं आजकल एयरपॉड्स की तरह जो डिवाइसेस होते हैं, TWS डिवाइसेस, स्पीकर्स ले लो, कैमराज ले लो, सिक्योरिटी सर्वेलेंस. आजकल गाड़ियों में बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गई है. ADAS सिस्टम आ गया है, टेलीमेटिक्स है, इंफोटेनमेंट है. ये सारा एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन होता है. तो वो जितने भी हमने डोमेन्स बताया, ये सारी चीज का आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हाँ जी, हम डिजाइन भी करते हैं और फिर हम मैन्युफैक्चर करते हैं. बट हम लैपटॉप्स, टैबलेट, सर्वर, इस तरह की बात बताइए क्योंकि टेक्निकल में हम घुसना नहीं चाहते. तो ये सारे काइंड ऑफ लाइक हमारे जो सोल्यूशंस प्रोडक्ट्स हैं, ये सब हम यहाँ पे डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए. जब हमारे कस्टमर्स फिर हमसे ये बनवा के फिर वो मार्केट में इसको सेल करते हैं, इंडिया में भी और ग्लोबली भी. अभी कुछ कस्टमर के नाम बताइए, कौन कौन कस्टमर हैं? आप we are under some NDA and agreement signed, so we cannot reveal our customers' name. Okay. But there are few press releases which are being done online, so you can Google and check it.
टेलिट का तो आपने आज नाम सुन लिया, टेलिट सिंटेरियन। सो टेलिट सिंटेरियन कम्युनिकेशन मॉड्यूल बनाती है कंपनी, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ग्लोबल। बताइए कि आज कम्युनिकेशन की बात हो रही है और आप लोग कम्युनिकेशन में काम भी कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम मोबाइल पे बात करते हैं या सर्फिंग करते हैं, इसमें अभी मंत्री जी भी जब बात कर रहे थे ग्लिचेज आ रहे थे। आज हम 5G 6G की बात करते हैं, लेकिन गाँव में आज भी बहुत सारे गाँव 80% है जहाँ 2G भी नहीं है। इस सब को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग गवर्नमेंट से या अपने खुद के दम पे किस तरह से काम कर रहे हैं? नॉट ओनली दैट, इवन दिल्ली एनसीआर में आपका जो फोन है, इतने आपके कॉल्स मतलब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आज कंपनियां 5G डाटा की बात करती है, उसकी सब हम तो उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करके दे देते हैं। ये प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी जो है, ये तो इसके लिए ही होगा कि आपका जो सर्विसेज है डिस्टर्ब ना हो। तो सर्विस मतलब प्रोडक्ट के पार्ट पे ठीक है, वी आर कम्पिटेटिव इनफ, यू मीन टू से, और जो उनका सर्विसेज है उनका इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है। इट विल टेक, इंडिया इज अ वेरी बिग ज्योग्राफी सर, पूरी इंडिया को कवर करने के लिए इट विल इवेंचुअली टेक सम टाइम। तो आप कनाडा में भी कर रहे हैं ना? हमारे कुछ कैनेडियन का ध्यान, हमारा प्रेजेंस है। कनाडा का एरिया हिंदुस्तान से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है। आबादी तो कम है, लेकिन उनका जो एरिया है 4 गुना ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है, अमेरिका से भी बड़ा है। सर आप यूएस जाइए, राइट, वहाँ का यूएस भी 3 गुना बड़ा है इंडिया से। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, राइट। तो कवरेज का प्रॉब्लम खाली इंडिया में नहीं है, इट्स अ ग्लोबल थिंग। तो अगर अमेरिका में कहाँ है? बॉस्टन, ऑस्टन, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया साइड, कैलिफोर्निया में हमारा फ्रीमॉन्ट में हमारा, वहाँ भी सिग्नल नहीं आते। मैं 5G का इम्प्लीमेंटेशन पूरा इसका इंफ्रा चेंज होगा, एंड विच विल टेक टाइम नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली। क्योंकि ये जो मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, मैं अभी We are at the VVDN facility, so the IT Minister Ashwini Vaishnav, we have just virtually inaugurated the assembly line. So we have Telit Cinterion, and what's your name, sir? Paolo, Pino, I'm the CEO of Telit Cinterion. Great. So we want to know about this facility. You started this company, you were co-founder. So what was the vision when you started this? So we started this company in 2007, and from the day one, we were very clear that we have to do the product engineering and manufacturing in India. As all of us are aware that India is largely software centric, but we took a decision back in 2007 that we have to develop, we have to manufacture the entire electronic products for several domains inside India. Yes, India ecosystem was very weak back in 2007, but we took that challenge, and today we are running the most sophisticated large manufacturing facilities within India. Not only manufacturing, we have a huge engineering strength of 5,000 people, which are capable of designing any complex product, from a small telecom module which we are manufacturing for Telit, to the large size servers which are being manufactured for the global customers. While I say telecom module, this is very important part of my life today, as we are doing partnership with Telit, because these telecom modules, one is that of course this is very complex technology, this is like a component to the whole product which we are going to manufacture in India, but also it will enable the whole global market for several OEMs in several domains, which includes automotive, IoT, industrial, as well as telecom. So overall, this is a great partnership. I thank Mr. Paolo to select VVDN as their partner, and of course, as VVDN always promised to every customer, we will deliver with very good quality and with very good cost points and make India very proud. Thank you. Paolo, it's over to you. So, how do you feel about this partnership between VVDN and your company? Well, I'm very happy because we do believe that India is probably going to become the technological hub of the world. We do strongly believe that we are on the right path, and the government is taking the right measures into this direction. We wanted to start being present here also on the manufacturing side. We already have an R&D center in Bangalore with many people there, and we were looking for a partner. We've been talking with many of these huge international groups, but at the end we thought there is only one with whom we know that we should trust and grow together, which is a real local player, and it is VVDN, the group led by Punit, because we as a group need alignment on
fast go-to-market, fast decisions, flexibility, and we found that all of these things were in VVDN DNA, in all the management of VVDN that we met. So we look forward transforming this partnership that today, is in the cradle. It's a startup into something big, and we want to transform this as a starting point for distribution of modules in India, where we need to become Telit and VVDN the largest player for the local market, but also transform the Made in India and Design Made in India by VVDN for Telit into a global product that we already have. We are today global leader as a Western player in the IoT industry, and I think that most of the modules sold around the world will carry the Made in India in the near future. So you're fulfilling the vision of a Prime Minister. Sorry? You're fulfilling the vision of a Prime Minister. The Prime Minister of India, Narendra Modi, he wants that more people... Had a wish, you said, yes, sorry. So you're fulfilling his wishes. Well, yes, we do think that there is really a great opportunity with all what is happening in the world and with the digital transformation that will be part of the society transformations all around the world. India has a huge opportunity. It can become, it's already a very relevant hub for software in the world. And we do believe that now also the manufacturing of high tech product is something that is ready in terms of know-how, abilities. We've seen, if you visit our line, that's quite a sophisticated line. You will see. Just gone through this. Yeah, I must admit, also our technicians were quite skeptical to be able to start this partnership so fast, because we decided at the end to sign a document together that was the beginning of the summer, June. Yep, June. And used to the other countries in which we produce and knowing how sensitive this is, we thought that the technology required time in order to be ready for the people, to be worked, but it was really fast. So the team here did a fantastic job. Now let's hope that we put them under pressure with high volumes. We have established a partnership with Telit Cinterion, which is a US-based company for manufacturing of telecom modules for 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, and also including smart modules. This is a very unique partnership where VVDN would be manufacturing, designing, and doing a lot of innovation for these telecom modules. These telecom modules will go into many products, including IoT, automotive, networking, telecom, in all the different domains. And also, I think this is the first kind of partnership happening in India where we are able to bring a market from the whole world, and we'll be delivering these modules to every customer in the global arena. Telit is a very strong partner for VVDN, and this partnership will go very long for next several years. Growth or extension? Growth and extension. Growth. So this will also help us in not only VVDN but also India becoming a major design, innovation, and manufacturing face for the whole world for telecom industry. These telecom modules, what we're going to manufacture in 4G and 5G, and then eventually 6G also, would not only be used in domestic India market, but also would be used in the whole global market. So it is very unique partnership, and I'm very confident that this will change the way everybody look towards India for telecom manufacturing. हमने आज टेलिट सेंटोरियन के साथ, जो एक यूएस की कंपनी है इरवाइन से, उनके साथ पार्टनरशिप किया है, जिसमें हम उनके टेलीकॉम मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं.
ये बहुत ही यूनिक पार्टनरशिप है जहाँ पे ये सारा काम जो बाहर होता था इंडिया से उसको हम इंडिया में लेके आ रहे हैं और इंडिया में सारा टेलीकॉम मॉड्यूल बनेगा और हर कस्टमर को ग्लोबली डिलीवर होगा। ये टेलीकॉम मॉड्यूल डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जाएंगे, डिफरेंट एरियाज में जाएंगे, जैसे आईओटी में, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास, ऑटोमोटिव के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, हर वर्टिकल के अंदर ये टेलीकॉम मॉड्यूल जाएंगे एंड इट विल ओपन अ बिग मार्केट फॉर इंडिया। मैं यही आशा करता हूं कि हमारी ये पार्टनरशिप अगले 5 साल में इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जाएगी जहां पे हर ग्लोबल कंपनी इंडिया के लिए टेलीकॉम पर्सपेक्टिव से आगे सोचेगी। थैंक यू। VVDN is committed to do electronic product design and manufacturing. Over years, over the last 16 years, we've been engaged with a lot of global companies in designing their electronic products, and now we are moving their manufacturing to India. In that process, we have set up world-class manufacturing facility. We have 8 SMT lines. We are doing injection molding, die casting, tooling. We are creating all the facilities internally to manufacture, design all these electronic products from India. We are committed to do more. We are bringing more and more brands to India. We are adding more SMT lines internally, and as a result of all this is also leading to huge job creation. And as VVDN, we are again enabling women empowerment, and we are creating more jobs for women. So if you see, a lot of our manufacturing lines are being run by women internally. So we are here to create more jobs, more products, create, innovate, produce. That's the motto of VVDN. Thank you. ऑटोमेटिक मशीन KY, इसमें सर कंपोनेंट का डिटेल थोड़ा लाउड। ये KY मशीन है, ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंजेक्शन। इसमें हम PCB का लोकेशन डिटेक्ट करते हैं, कौन से कंपोनेंट माउंट हुए हैं, कौन से नहीं हुए। इसमें मिसिंग, कमिस्टोन, बिल बोर्ड, शिफ्टिंग, सारी इश्यूज इसमें पकड़ी जाती है। ये KY मशीन इमेज एक ओके कैप्चर करके ऑब्जर्व करो। जी बताइए। विजुअल इंस्पेक्शन, यहाँ पे हम बोर्ड को मैनुअली चेक करते हैं। इसमें वहाँ इमेज लगी है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कोई कंपोनेंट मिसिंग या सिंक वगैरह। सर मैं एवाई कर रही हूँ। एवाई इसके बारे में बताइए, क्या होता है ये? सर इसमें मैं पीसीबी को चेक करती हूँ। थोड़ा सा लाउड। सर इसमें मैं पीसीबी को चेक करती हूँ, उसमें कौन से कंपोनेंट लगे हैं और वो मिसिंग ना हो, लिफ्टिंग ना हो, सिंकिंग ना हो, डम शॉम ना हो और उसमें सर बोर्ड वगैरह ना हो। थैंक यू सर। थोड़ा लाउड। यहाँ पे
जो कैमरा बनते हैं, कैमरा प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाते हैं, उनका पीसीबी जो ग्राउंड लेवल पीसीबी होता है असेंबली होता है वो करते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं पूरा। IoT के प्रोडक्ट है, विजन का है, 5G है, ऑटोमोटिव है, क्लाउड्स है, ये सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? थोड़ा लाउड भी। इसमें क्या होता है? थोड़ा तेज बोलिए। सर इस बोर्ड से देखिए, स्क्रीन पे देखिए, तो हम देखते हैं कि लिफ्ट कई कंपोनेंट लिफ्ट या लिफ्ट को लाइट काम ये सब करना है। Of these devices, these are basically prone to the HD sensitive component are there. They will break the junction which is inside the component. So this whole floor is HD grounded. The copper plates is underneath this whole floor. They are properly grounded. The safety of the electronic component we have to take out. We have to wear the HD slippers there. कब से है ये? Company is born in 2007. Started in the 2007 from Gurugram. आप प्रोडक्शन कब से कर रहे हैं? 2020. 3.5 years. पहले तो ये सब चीजें जो थी सब बाहर से आती थी। नहीं, ये बनती थी बाहर से, पर हम लोग भी बनाते थे, बाहर से बनवाते थे। डिटेल में बताइए क्या चीज़ है, ये क्या होता है? काउंटर में हमारे कंपोनेंट लोड होते हैं अकॉर्डिंग टू फिटेड सेटअप, तो वेरीफाई किए होते हैं प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो उन्हीं को जो हेड है ना वो पीसी पे पिक एंड प्लेस करता है, माउंट करता है कंपोनेंट को। जी, आप बताइए क्या काम कर रहे हैं? मैं प्रिंटर पे काम करती हूँ। डिटेल में बताइए। हाँ, प्रिंटर पे जो हमारी पीसीबी होती है उसमें जो भी उसके अपैचेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग पेस्ट प्रिंटिंग की जाती है और देन एसपीआई किया जाता है स्टैक माउंट में। VI कर रहे हैं, डिटेल में बताइए क्या चीज़ होती है? काउंटर से कंपोनेंट जब क्या करते हैं आप उसका चेक करते हैं वो सही जगह पर लगाए
तो ये जो पूरी मशीनरी लगी है, ये मशीनरी के थ्रू ही चलती हुई आती है या अलग से असेंबल करते हैं? मतलब चलती हुई आती है, अपना अपना काम करते रहते हैं आप? आप बताइए क्या काम कर रहे हैं? इधर देखिए मेरी तरफ और थोड़ा जोर से बताइए। सर हम कंपोनेंट्स जो है वो बफर में डालते हैं। अच्छा, और क्या काम होता है इसमें? इसमें बफर में डाल के यहाँ पैनल में इसमें डाल है, फिर इसका दवाई उधर होता है। आपका काम सिर्फ इतना है कि कंपोनेंट इसमें डालना है? हाँ, फिर ट्रेनिंग। अच्छा, बताइए क्या काम कर रहे हैं आप? ये पीसीबी लोडर मशीन है, यहाँ पीसीबी लोड करना, पीसीबी यहाँ पे डाल। ये पीसीबी क्लीनर मशीन है, पीसीबी यहाँ क्लीन हो जा रही। आगे ये प्रिंट करता पीसीबी। अच्छा, पेस्ट प्रिंट करता है। और ये एसपीआई पेस्ट इंस्पेक्शन मशीन है, ये पेस्ट का इंस्पेक्शन करता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका काम है? यस। हाँ जी, इधर देखिए, बताइए क्या काम कर रहे हैं आप? यहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन। थोड़ा जोर से पीआई। डिटेल में बताइए क्या होता है ये? विजुअल इंस्पेक्शन। हाँ, विजुअल क्या काम करते हैं आप, ये बताइए ना। यहाँ पे हम जो बोर्ड माउंटर से चिप माउंट होके जो आता है, फिर यहाँ पे हम शिफ्टिंग लिफ्टिंग के सेट चेक करते हैं मैनुअली। एओआई क्या होता है वो डिटेल में बताइए। एओआई होता है फिर ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन। इसमें हमारा जो बोर्ड आता है, इसमें सारा इंस्पेक्ट होता है। इसमें हमारे सारे चेक ताजा तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस? ये फाइनल प्रोसेस है आपका? यस सर, एआई के बाद जस्ट नेक्स्ट ये एक
क्या कहते हैं